Hi, good evening, everybody. And today we are going to prove this particular theorem. It is very simple. यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप इसको फटाक से कर लोगे. सवाल आपका ये है कि रूट टेन इज एन इरेशनल नंबर प्रोवाइडेड दैट एन इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. तो अंडर रूट टेन एक इरेशनल नंबर तभी होगा जब एन खुद एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि यदि परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो फिर तो वो अंडर रूट से बाहर हो जाएगा. इट इज गोइंग टू बिकम ए नेचुरल नंबर, है ना, एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए पी बाई क्यू फॉर्म. और यदि नेचुरल नहीं भी होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 9/4 है, इट कैन बी रिटन एज 3/2, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में निकल आएगा. सो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बिकम ए रैशनल नंबर. तो हमें प्रूव करना है कि एन जो है वो यदि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका जो रूट होगा तो हमेशा इरेशनल होगा, नंबर होगा. तो कैसे प्रूव करें? शुरू करते हैं. कॉन्सेप्ट वही है कि हम पहले मान लेते हैं कि जो रूट एन है वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि आपने पूछा यहाँ पर रूट एन इज एन इरेशनल नंबर तब होगा जब एन इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, तो अज्यूम करते हैं. लेट अस अज्यूम दैट, लेट अस कंसिडर दैट, let us consider that root n is a rational number. ये एक रैशनल नंबर है. दैट मीन्स इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए पी बाई क्यू फॉर्म such that p and q are integers. ठीक है, ये दोनों इंटीजर्स होंगे, वही हमारी जो डेफिनेशन है, आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो यदि ये p और q दोनों इंटीजर्स है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, साथ में हम एक चीज और मान लेते हैं कि यदि ये p बाई क्यू फॉर्म में है तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं. दैट मीन्स वी कैन राइट डाउन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एज ए न्यूमरेटर एंड ए डिनोमिनेटर हैविंग नो कॉमन फैक्टर बिटवीन देम. ऑल्सो p and q have no common factor between them except one, that is p and q are co-prime numbers. I hope you know what is the meaning of co-prime numbers. Co-prime numbers are such numbers जिनमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता सिवाय 1 के. ठीक है, those numbers are not required to be prime, but they do not have any common factors between them except 1. देखो 4 and 5 आपस में को प्राइम है, क्योंकि 4 और 5 के बीच में कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो कॉमन है एक्सेप्ट 1. 4 का कोई फैक्टर 5 को डिवाइड नहीं करता है एक्सेप्ट 1. 5 का कोई फैक्टर 4 को डिवाइड नहीं करता है एक्सेप्ट 1. चलो आगे बढ़ते हैं. हेंस p upon q is equal to root n. Sorry. So p is equal to, so p square upon q square is equal to n. मिल गया मेरे को. Let us do it here only. So p square is equal to n times of q square. So can I say that p square has two factors? One is n, other one is q square. I can do that. This means n is a factor of p square. यदि n p square का फैक्टर है, this implies n is also a factor of p. So I can write, hence p is equal to n into a मान लेते हैं.
p is equal to n into a, where a is also an integer. N comma a, where n comma a are also some इंटीजर्स. n तो है ही इंटीजर्स, a भी इंटीजर है. ठीक है. नाउ p स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर a स्क्वायर. कैन आई राइट इट डाउन लाइक दिस? सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है, यहां पर मैं ये वाली वैल्यू लगा सकता हूं. n स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू क्यू स्क्वायर. एक n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर. यहां से क्या मिल गया? दिस मीन्स यहां से क्या मिल गया? यहां से मुझे मिला n इज ए फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर. दिस इंप्लाइज n is a factor of q. यदि कोई नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर का फैक्टर होगा तो वो नंबर उस परफेक्ट स्क्वायर के अंडर रूट का भी फैक्टर होगा. दिस इज ए प्रिंसिपल, दिस इज ए थ्योरम. सो n is a factor of both p and q. How could that be possible? We have already defined from the very beginning that p and q have no common factor between them except 1. How could n is a factor of p and q? So this is a contradiction. This is a contradiction of our assumption that, क्या था हमारा assumption? That p and q have no common factor between them except 1. Hence our assumption is wrong. Hence our assumption is wrong. And what was our assumption? Our assumption is that root n is a rational number. So root n is an irrational number. Hence proved. ठीक है? You can check this out. This is again a very important theorem. I expect that somebody who has done all the chapters, I mean all the concept properly, is able to understand this particular process and be able to solve this question in the paper. और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ पूरे नंबर आएंगे आपके. You have to write down each and every line properly one by one, and if this is all going to happen, 100% you're going to get the full marks for this. So this is sure that under root n is definitely going to be an irrational number, provided that n is not at all a perfect square. If it is not a perfect square, then under root of any number is going to be an irrational number. For an example, root 31, root 27, root 75, root 80, root 101, these all are going to be an irrational number. They all are rational numbers because of the fact that they themselves are not at all a perfect square. ठीक है? तो ऐसे वाले सवाल आपके पेपर में दिया आता है तो आपको ऐसे प्रूव करना है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू सो मच. मे गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय.